a very prolific writer and a very good researcher. I think he must have contributed somewhere around 100 books in the chapters and the research papers, conference paper, and a lot of publications that he has made. He has also completed the various projects and seminars on an effective framework for managing the university data in the cloud-based environment, and organized various symposia, workshops, and seminars, and has also attended a lot of such academic exchange programs. And he has been a reviewer, as I have already discussed, and he has a long list of contribution in the field of the academic and the corporate life of the university. He has held a number of positions and a member of the various committees at the Jamia and in the other universities as well. So with this brief introduction of him, I would like to invite him for today's session. As you all were requesting about the practical session, though he is also a man, as I have read his brief profile. So you must have acquired that insight that he is deeply into the computer science and e-content, and also on the various other platforms, similarly, where the use of ICT is numerous for the research and education. So we are looking forward for you, sir, to learn a lot more from you, not only as a person, not only as a professor, but also on this practical front, sir. Thank you very much, ma'am, for nice introduction. I'm really happy to give a talk in your great institution. I know ma'am very well since long time. Ma'am is always helping, always organizing good quality of programs. And the participants in ma'am program are very interactive and active. So to give some information in your program is not the easy task for me, because all participants are very active. So I search some new things and interested to tell you about that new things that will be very, very helpful in your teaching and the research. Respected director, thank you very much for inviting me as a resource person in your program. And thank you to the participants who joined this program to get some knowledge. So I hope after the end of this lecture, hopefully you will learn something and you will apply that learning and knowledge in your teaching and in your research. Friend, just I'm going to start from scratch, just giving brief about my talk. All are teacher, so I'm not going to teach you. Just I'm going to share some information. An outcome of my talk and the lecture will be helpful in your teaching and in your research. First, let us start from the problem. What teachers are facing problems? And I'll give the solution of that problem at the end of this lecture or in the middle of this lecture with the help of practical example. Friend, when you are teaching a student, you are facing a problem of communications. Some persons coming from the village, they don't understand English. And you know only English. So when you are going to communicate with the student, some student will understand your lecture and some student will not understand your lectures. So this is one kind of problem in the classroom. How can you solve it? Sometimes when you are going to give a lecture with your PPT, with your notes in the classroom, meanwhile, in the way, you have lost your notes, you have lost your PPT, then what will happen?
Will you take the class in the classroom because all material you have left at the home or somewhere else? So there is another problems. And lot of problems are faced by the teacher in the teaching. Sometimes students are not understanding with the voice, with the text, whatever you are writing on the board. Is there any alternative ways to convince the student about the topic? This is the another problem. So for solving these all problems, I'll show you a technology and the tool that will be helpful in the teaching. Another aspect, that is the research. All teachers are doing research. In what are the problems we are facing in the research? Suppose you have a paper. You have written a paper doing the research, and the outcome of your research is valid or not. How can you validate your work? To validate your work, you have to find out the research paper, and you have to do the review, and then you can compare your result. But searching the paper related to your research, it is very difficult task right now to searching and reading and then selecting the paper. So there is a tool that will show you all connected paper within a fraction of time, fraction of minute. How many papers are connected with your theme, your paper, and from there you can directly see the result and compare your result with the existing literature. And how this technology will be helpful in the research. Friends, just remember, before using the technology, we were facing a lot of problems. I think language is no bar, both language will be required, or Hindi, English? Yes. Okay, I got it. So I will speak in both language, so no problem. तो जब हम रिसर्च करते थे पहले, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे, तो देखिए कितनी प्रॉब्लम्स होती थी रिसर्च में. हम थेसिस को राइट करते थे बाय द टाइपराइटर. अगर कहीं गलतियां हो गई तो फिर पूरे के पूरे दोबारा टाइप करते थे. तो वहां पे जैसे ही कंप्यूटर आया या टेक्नोलॉजी आया तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गई. तो जहां भी हम रिसर्च और टीचिंग में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो वी कैन गिव द मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम. सो आज का विषय है, आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड रिसर्च. We'll see one by one how these technologies are helpful in our teaching and research. These days, without technology, doing the research is very difficult. When you are going to do the research, you need some tools, techniques, and research paper. And that tools, technique, and research paper are easily available with you after using the technology. अगर आप एक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं तो आप हर लाइब्रेरी में आपको जाना होगा. लाइब्रेरी से जाकर आप बुक उठाएंगे, इंसाइक्लोपीडिया लेंगे, वहां से रीड करेंगे. तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लाइब्रेरी को विजिट करना है, फिर आपका ट्रेवल प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम कंज्यूम होगा. टेक्नोलॉजी के जरिए एट योर होम यू कैन टेक एनीथिंग. सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं टेक्नोलॉजी का, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ये लॉकडाउन पीरियड में हुआ. अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो 1 साल का लगभग लॉकडाउन रहा, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाता, स्टॉप हो जाता. हर इंसान अपने अपने घर में बैठा था. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आपको घर में बैठना भी मुश्किल हो जाता, कोई स्टडी करना भी मुश्किल हो जाता, कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता. तो क्या हुआ कि वहां पे हम घर से टीचिंग करने लगे, जैसे गूगल मीट, क्लाउड, एटसेट्रा. व्हाट्सएप आपने किया, दैट इज क्लाउड. गूगल मीट इज ए क्लाउड. सो क्लाउड टेक्नोलॉजी हेल्प द पीपुल टू कम्युनिकेट द मैसेज and teach the student
and doing the research while you are sitting at your home. आप घर बैठे, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि लॉकडाउन में जो हमने टेक्नोलॉजी यूज किया, अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं होती तो क्या होता। हम सब लोग घर बैठे होते, ना स्टूडेंट नॉलेज ले पाता, ना आप नॉलेज दे पाते, ना आप रिसर्च कर पाते, ना रिसर्च करा पाते। घर में बैठे ना आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते। तो चलिए अब फॉर्मल स्टार्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ए पीपीटी इन अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन। I hope my PPT is visible to everyone. Applications of technology in teaching. First, see what is knowledge. There are three things: data, information, and the knowledge. And how we are going to teach the student, and how we are going to take the knowledge. So, group of data, collections of data, process data is the information, and collection of information is a knowledge. So knowledge is play important role in teaching and the research. And how we are acquiring the knowledge as a teacher, and how we are going to give a knowledge to the student, either the PG student, undergraduate student, or research scholar. So let us see the mechanism, how we are getting information and how we are imparting our knowledge to the people in the society also. अब देखिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो मैसेज को ट्रांसमिट करना मुश्किल है। जो आप सेंड करेंगे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, वो मैसेज नहीं जाएगा। तो नेटवर्क का होना जरूरी है, क्योंकि उस नेटवर्क में डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज किया गया, डिफरेंट कंप्यूटर यूज किया गया कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अब देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं। तो आपके और स्टूडेंट के बीच में अगर नेटवर्क नहीं है, तो जो आप टीचिंग करते हैं वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है वो टीचर को नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले इन ए क्लास यू हैव टू मेक ए नेटवर्क, दैट इज द बॉडी एरिया नेटवर्क। देयर इज नो टेक्नोलॉजी देयर, वहां पे हम कोई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। दैट इज माइंड टू माइंड, यानी कि आपका ब्रेन कनेक्टेड विद द स्टूडेंट ब्रेन, एंड ऑल स्टूडेंट ब्रेन आर कनेक्टेड विद योर ब्रेन. So there are 4 activities take place in the mind of a student and the teacher. What are these 4 activities? The first one, attention. Second one, rehearsal. Third one, encoding. And fourth one, retrieval. ये 4 एक्टिविटीज ये स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं करते। हम अभी बात जो कर रहे हैं, एक डस्टर एंड चॉक क्लासरूम टीचिंग। जैसे ही क्लासरूम में गए आप, स्टूडेंट है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है और आप है, देयर इज नो टेक्नोलॉजी। अब हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि वहां पे कैसे काम करता है, और फिर वहां पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या इस टेक्नोलॉजी के यूज करने से हमारा टीचिंग इंप्रूव हुआ, क्या बच्चों का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ या नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा एक सर्वे के अकॉर्डिंग कि जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारे रिसर्च क्या इंप्रूव हुआ या नहीं, विदाउट टेक्नोलॉजी हमारे रिसर्च का आउटकम क्या है और टेक्नोलॉजी के बाद आउटकम क्या है। इसी तरह से टीचिंग में विदाउट टेक्नोलॉजी और विथ टेक्नोलॉजी क्या फर्क है। तो जैसे ही क्लास में गए, हम बच्चों से बात किया, तो हमारा एक नेटवर्क बन गया। जो कुछ हम क्लास में डिलीवर करते हैं, बच्चे का जो माइंड, बॉडी का जो इनपुट ऑर्गन्स है, जैसे ईयर है, आई है, उसने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो उसको क्या करता है, यानी कि पहला स्टेप है अटेंशन। जैसे ही अटेंटिव हुआ, वो आपके माइंड से कनेक्ट हो गया। वॉट एवर यू आर टेलिंग, दैट पर्सन इज गेटिंग इट। आपने कभी देखा हो 10 लोग बातें कर रहे हैं, वहां पे एक आदमी अटेंटिव नहीं है, जो कुछ बात करेंगे उसको माइंड में नहीं जाता, क्योंकि वो आपके नेटवर्क में नहीं है। अब क्या है,
कि जैसे उसने मैसेज दिया उस स्टूडेंट के माइंड में, तो वहां शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसे ही मैसेज गया, उस मैसेज का जो दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, दैट इज रिहर्सल। रिहर्सल में उस इंफॉर्मेशन को रिफाइन करता है और सवाल पूछता है आपसे, टीचर से सवाल पूछता है स्टूडेंट। पहला सवाल पूछेगा व्हाट, इसका मतलब कि जो उसका स्टेटस है विदाउट टेक्नोलॉजी वो स्टूडेंट है। अगर दो सवाल पूछता है व्हाट एंड हाउ, दैट इज द ब्रेन ऑफ ए टीचर। एंड तीसरा सवाल करता है व्हाट, हाउ एंड व्हाई, देन दैट इज द रिसर्चर एंड द साइंटिस्ट। आफ्टर करेक्टिंग द मैसेज, they ensure that the message is good and the quality, there is no error. Then the third process starts, that is encoding, transferring the data from short-term memory to the long-term memory. और डेटा वहां परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और चौथा स्टेप होता है रिट्रीवल। तो जैसे ही कोई से सवाल पूछता है उसका जवाब दे देता है। अब ये चारों एक्टिविटी जब हम टीचिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, अब आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो स्टूडेंट है डिफरेंट टाइप का होता है। सम टाइप ऑफ स्टूडेंट आर द टेक्स्ट लर्नर, वो टेक्स्ट लिखेंगे उसको अच्छी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया था, अब हम टेक्नोलॉजी का यूज करने जाएंगे। अब उसमें से कुछ बच्चे हैं जो डिफरेंट लोकेशन से आए हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आप बोल रहे हैं, कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। यानी जो वॉइस आपका है, उस वॉइस को आप जो दे रहे हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल अंडरस्टैंड योर वॉइस एंड सम ग्रुप ऑफ पीपुल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर वॉइस, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो देयर यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी so that the person who is understanding your voice without the technology and who not understanding your voice without technology, then you can use the technology. तो दोनों चीज हो गया। आपका वॉइस कुछ बच्चों ने किया, जब टेक्नोलॉजी किया तो अदर ग्रुप ऑफ पीपुल, अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स who are not understanding your voice, they can understand with the technology. तो आपने क्या किया, वॉइस के लिए आप बोले और वहां पे एक टेक्नोलॉजी को यूज किया। टेक्नोलॉजी क्या यूज करना है वहां पे? मान लीजिए कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और कुछ बच्चों को अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है, तो देयर इज ए ऑप्शन, पीपीटी से पढ़ा रहे तब देन यू हैव टू यूज द पीपीटी। और पीपीटी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए पढ़ा रहे। अब उस पीपीटी जो ट्रेडिशनल है, हम कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उस पीपीटी में जो इंग्लिश में लिखा आपने, अगर जैसे ही उसको इंग्लिश में बोलेंगे और चाहेंगे तो उस जिस लैंग्वेज में चाहेंगे वो पीपीटी का कंटेंट लैंग्वेज में बदल देगा। चाहे वो पीपीटी आपको लिखना नहीं है, इंग्लिश लिखा है आपने, उसी पीपीटी में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको समझ में आया कि इस बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, जैसे वहां क्लिक करेंगे दैट लैंग्वेज विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द हिंदी, पर्शियन, पुर्तगाल, ऑल जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, Bengali, any language that PPT text should be converted. Any language, more than one language, you can convert it. Sometimes you are speaking and a student are not understanding. So in a PPT, there is an option, whatever you are speaking, that is translating and converting on the screen. In which language you have set it. So in this way, if you are using the technology, that will increase the performance of a student in the classroom. Similarly, in our research, you can also improve the quality of research by using the technology. So this is the way that you can use the technology in your teaching and your research. Now see, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आज के डेट में हम बिना टेक्नोलॉजी को यूज किए आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हर जगह पे फोर्स किया जाता है, फोकस किया जाता है कि डू एवरीथिंग डिजिटली। इससे आपको फायदा है कि डिजिटल फॉर्म में अगर आपका चीजें है तो यू कैन डू द वर्क इन वेरी इनोवेटिव वे।
यानी आपको उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक कोट मुझे याद आ रहा है एक साइंटिस्ट का, कि जो इंसान वातावरण के अनुकूलित अपने आप को नहीं बदलता है उसका जीवाश्म प्राप्त हो जाता है। तो आज के डेट में हर इंसान टेक्नोलॉजी को यूज करता है अपने डे टू डे लाइफ और इन एजुकेशन और इन रिसर्च। So you have to also adopt the new technology, then you can survive. Without the technology these days, every time new policy is coming. So according to situation, you have to change or you have to adopt the technology. And most frequently, people are adopting the new technology in the research and the teaching. And we know this technology definitely helpful in our teaching or research. So technological innovation is essential for the human development. आप अपने आप को ह्यूमन को डेवलप करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही एसेंशियल हो गया है आज के डेट में। लाइक फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेस टू द कंप्यूटर, पीपल have devised tool for facilitating learning and the communications. Technology is not inherently good or bad. The outcome depends on how it is used. देखिए, कभी कभी हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से, हम भी इसी में बिलीव करते हैं कि डस्टर बोर्ड की जो क्लासेज होती है वो बेस्ट होती है। मैं भी बिलीव करता हूं, काफी लोग बिलीव करते होंगे कि हमें तो पीपीटी से अच्छा जो है डस्टर चौक लगता है। बात सही है कि आप जितने देर लिखते हैं तो जो हमने बताया स्टूडेंट का माइंड वहां काम करता है, उतने देर लिखेंगे उतने देर उसको प्रोसेस कर लेते हैं। बट पीपीटी का जो हम यूज करते हैं उसको रीड करते चले जाते हैं। देखिए, अब टेक्नोलॉजी का यूज करना इज ए गुड और बैड, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गोइंग टू यूज। अब मान लीजिए पीपीटी ये टेक्नोलॉजी है, जो हमने कहा कि पीपीटी में बहुत सारे फैसिलिटीज है। अगर आपने पीपीटी लाया और उसको रीड करते चले गए, दैट इज नॉट गुड यूज ऑफ द पीपीटी। क्योंकि पीपीटी का जो यूज करना है, मान लीजिए जो आपने जो बोल रहे हैं उसको